Hi my dear bachas, how are you guys doing? I hope all of you are staying home and staying safe. Now, ये मेरी tagline बन चुकी है. I don't think I'm going to give up on this any soon. At least not till I get to step out of the house. Okay, so how are my dear bachas doing? I hope आप सब बहुत मजे में हो despite of all the disturbances going around. I hope you're staying home, guys. I hope you're safe. And with today's session, I bring something very interesting. कुछ बहुत interesting लेकर आई हूँ मैं, कुछ बहुत unusual जो आज से पहले हमने नहीं किया है, which is the NCERT Solutions. Now, this is something that we have never done before. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम हाउ कैन वी इंश्योर दैट आई एम स्कोरिंग बेस्ट इन दिस सेक्शन, हाउ कैन आई इंश्योर दैट आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस राइट, एंड हियर इज योर आंसर. यहाँ पे आपका सोल्यूशन आपके सामने है. For the first time, guys, we are discussing the NCERT solutions, wherein you're going to find all the answers for all the questions which is given in your NCERT book. आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी, उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जैसा आपको पता है, उमंग सीरीज के जितने भी सेशंस हो रहे हैं वहाँ पे हम सारे टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ते हैं. However, because of the way we have designed the sessions, we kind of are not able to accommodate all the questions and exercises over there from the NCERT book. और ये बहुत मेजर कंसर्न था काफ़ी लोगों का, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने बच्चों को ऐसे परेशान नहीं देख सकते हम लोग. एंड हियर वी ब्रिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू which is actually the NCERT solutions. Weird, bad joke, but yeah. So what we're going to do, guys, is we're not just going to discuss the questions which will be given at the end of the chapter, but at the same time we will also discuss the questions which are given there through the text, which we can also call the in-text questions. So the very first session starts here. A very warm welcome, and I hope you're gonna love it and enjoy it with your master teacher Ankana at Vedantu for Social Sciences. And let's get started. So today's discussion is going to be on the questions given on your page number 50 under Write in Brief. Question number 1, A, B and C. आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन और हमारा अप्रोच क्या होगा. नाउ बिफोर आई गेट स्टार्टेड, आई जस्ट वांट यू टू बी अवेयर ऑफ व्हाट द अप्रोच इज गोइंग टू बी. हम क्वेश्चन पढ़ के पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार, एंड दिस इज हैपेंड विथ मी ऑल्सो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर समटाइम्स, दैट वी मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, क्या पूछा जा रहा है, एंड वी एंड अप आंसरिंग समथिंग विच मे बी रिलेटिव but not on point. So the whole idea of this is to exactly see how the approach is going to be. हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, उसके मतलब को समझेंगे और किस तरह से उसके बारे में लिखेंगे. How will we answer it? What are the certain points that we need to put over there? And also, how can we make sure that we are doing, we are learning the art of writing the answers, which is another skill. So we're going to learn to develop that through these sessions. And this is going to be a whole new series. And I think you must be very excited, because I certainly am. Let's get started with the very first question. So this is the first question under Write in Brief 1A on page number 50 for your nationalism in India. Also, guys, before I move forward, and I know I have interrupted myself, खुद से मैंने खुद को ही इतनी बार interrupt कर दिया है. The flow has been broken. So basically I wanted you to know कि आप ये सोच रहे हो कि मैम सीधा नेशनलिज्म इन इंडिया से क्यों शुरू करी है, हमने और भी चैप्टर्स किए हैं, और भी चैप्टर्स है. So बच्चा, you don't have to worry, my dear sweet little बच्चास, you don't have to worry. हम सारे चैप्टर्स जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो ऑप्शनल चैप्टर्स भी हैं, हम सारे क्वेश्चन आंसर्स उन चैप्टर्स के डिस्कस करने वाले हैं. We're just getting started with this because this is the chapter which is ongoing right now. It will help you to relate and to have a good context as आप अभी यही पढ़ रहे हो हमारे चैनल पे. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट.
तो ये जो भी नेशनलिज्म, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी, वो लोगों में अचानक से डेवलप हो गई थी। पर ये सारी डेवलपमेंट, अगर आप याद करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जब हमने पहला सेशन किया था, हमने यही बोला था कि लोग क्यों यूनाइट कर रहे थे, बहुत अलग अलग तरह के लोग थे। वाई वर दे यूनाइटिंग? द रीजन वॉज बिकॉज ऑफ द वे दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड। जो कॉलोनीज थी उनकी वजह से उन्होंने जो एक इमोशन क्रिएट कर दिया था लोगों के अंदर, दैट वाज अ मेजर रीजन टू बाइंड देम। सो सवाल यही है कि जो नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ कैसे हुई, हाउ डिड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रो इन पीपल, बिकॉज एंड हाउ इज इट लिंक्ड, मतलब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट उस फीलिंग के राइज के लिए। सो एज वी नो, एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ हैव आंसर्ड ऑलरेडी, हमें दो तीन चीजें ये याद करनी है कि पहले कॉलोनाइजेशन क्या थी, नेशनलिज्म क्या था, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब कुछ हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चन सेज राइट इन ब्रीफ, विच मीन्स दिस इज हार्डली बी अ क्वेश्चन ऑफ 1 mark or maybe 3 marks, then we may have to give examples, but not more than that, because it's a write in brief question, it's going to be for very less number of marks, right? So we have to answer this in brief. तो हमें बस ये बताना है कि कैसे, क्या हुआ था जिसकी वजह से कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो थी वो उसने लोगों में एक भावना जगाई नेशनलिज्म की। तो जैसा आपको याद होगा, स्पेशली इन कंट्री जैसे इंडिया, इतनी डाइवर्सिटी थी, इतने तरह के ग्रुप्स थे, इतनी तरह की डिफरेंसेस थे, दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ द पीपल टुगेदर। What united them was actually this feeling of being oppressed or suppressed by these colonies, by these people who were dominating everybody. और इस डोमिनेंस की वजह से ये स्लेवरी, ये डोमिनेंस, ये सप्रेशन लोगों को यूनाइट कर दिया, क्योंकि हर एक इंसान एक तरह ही फील कर रहा था, एंड दैट इज हाउ it led to the growth of the feeling of nationalism. And let's see now how will we write this down. So the colonial powers exploit the people of their colony in such a way that the people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. Okay? The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. As I told you, the diversity was neglected when it came to the feeling of being suppressed by these colonies. Okay, guys, what you can do is download this video, have a look at it whenever you want to, because आपको लग रहा होगा अभी तो मैम वीडियो में बोल रही है, ये आंसर हम कैसे देखेंगे। So for your reference, you can always download the video, subscribe to the channel and like the video, because it will help you come back to this whenever you want to, and whenever there will be a new video coming up, you will always get the notification. Next question, question number 1B. How the First World War helped in the growth of the national movement in India. First World War कैसे responsible थी national movement in India के growth के लिए? अगर आपको याद होगा, नहीं भी होगा तो क्या करना है, फटाफट से वापस जाना है मैम के वीडियो पे, जहां पे मैम ने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया है, पूरी सीरीज देखनी है और फिर आकर के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी है, और देखना है इस वीडियो के साथ, वेरीफाई करना है और रेक्टिफाई करना है अपने मिस्टेक्स को, और इम्प्रोवाइज करना है अपनी आंसर राइटिंग को, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इफेक्ट किया था नेशनल मूवमेंट को। सो व्हाट हैड हैपेंड, इफ यू रिमेंबर, ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था, राइट? इंडिया वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सपेंडिचर थी वो बहुत ज्यादा डिफेंस में बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों को बहुत हरास होना पड़ा था, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था, डिफरेंट तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो गए थे, और जो कस्टम रेट्स है वो बढ़ गए थे, और ये सब किसके ऊपर इम्पोज हो रहा था, इंडियंस के ऊपर। परेशान हम लोग हो रहे थे। सो दिस इज वन थिंग दैट मेड पीपल रियली एजिटेटेड। पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, लड़ने के लिए भाई लोग चाहिए थे, और ब्रिटिशर्स तो खुद जाने वाले नहीं थे, तो वो किसे भेजते थे, जितने भी लोग थे विलेजेस में, दे वर बीइंग फोर्स्ड टू जॉइन द आर्मी एंड गो एंड फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हिच वाज अनदर रीजन व्हाई पीपल वर सो अपसेट विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, एंड द इकोनॉमी वाज ऑन अ डाउनफॉल. But they were not really understanding, and they were forcing people to take taxes, like to give taxes, and all of this had agitated the people a lot, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट इन इंडिया ग्रो करने लगी, क्योंकि लोग अब खुलकर प्रोटेस्ट करने लगे, अब वो और ज्यादा ये जाति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, राइट?
So let's look at how can we frame this answer. Guys, also one more thing, यहाँ पे हमने pointers में दिए हैं आंसर, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो. हमें बस ये मेक श्योर करना है that we are dividing those paragraphs in clear points. It's not necessary that you always write it in points. It's always suggested or ideal to write those answers in paragraphs, making sure that each paragraph talks about one point. ठीक है? So it led to a huge increase, First World War led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax was introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardships of common people. Villagers were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger, and these are the reasons which led to the agony of people which led to increased agitation and agony among the people of India who were already suppressed by the Britishers, and this further led to the growth of nationalism in India, to the national movements in India. Okay? Which brings us to the third and the last question of this session, which is question number 1C on page number 50. Why Indians were outraged by the Rowlatt Act? यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये एक्ट था क्या. अगर आपसे किसी भी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, the best way to approach that answer is to first of all talk about that act. पहले समझाओ तो सही, उन्हें कैसे पता कि तुम जो बता रहे हो वो सही है कि नहीं. In a short, if it's for less number of marks, in a short we just have to introduce the act. एक one line में उसके बारे में बता दो. अगर आपको ये let's say ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ये एक्ट कब आया था, what was this act about, who were the people responsible for this, what were the effects of it, what was the purpose of having this act. We can go into more and more description, we can be more and more descriptive. However, for this one, because we have been asked to write in brief, it will not be for a lot of marks. So हम सिर्फ ये बताएंगे कि Rowlatt Act था क्या, उसके इफेक्ट्स क्या होने वाले थे और उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स क्या हुए, why were people outraged. So, सबसे पहले हमें पता है इस एक्ट की वजह से क्या हुआ था, लोगों की ट्रायल की जो राइट थी वो ले ली गई थी. पॉलिटिकल जो भी प्रोटेस्टर्स थे, दे वर विदाउट ट्रायल बीइंग सेंट टू प्रिजन. उनको ट्रायल के लिए भी नहीं ले जाया जा रहा था फॉर 2 years. दे कुड हैव डायरेक्टली बीन इम्प्रिजन्ड, एंड दिस was something which outraged the people, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी, वो और बढ़ जाएगी, उन्हें और ज़्यादा पावर मिल जाएगी और वो और ज़्यादा लोगों को सप्रेस करेंगे, और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उनसे. So the Rowlatt Act was passed through the Imperial Legislative Council on a report of the Sedition Committee headed by Justice Rowlatt. This act gave the government and the police the power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. It was passed against the united opposition of the Indian members of the council. Therefore, the Indians were outraged by this act and considered it as a black act, as it was against their dignity and national sentiments. Okay, with this we come to the end of the session. I hope you really enjoyed the session. तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जल्दी आपके लिए सेकंड सेशन लेकर के आ रहे हैं, जहां पे हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, not just from the exercises given at the end of the chapter but also the in text question. Guys, also I'm sure आपके बहुत सारे friends होंगे who would be right now struggling with the challenge of how to write answers, what answers to be written. Please share the video with your friends, tell them about this series that we have just started, and stay tuned. I will see you in the next session, and by the time, stay home, stay safe, take good care of yourself. Bye bye guys, and have a great day ahead.